Hello friend, welcome to my channel RK here, and today we are going to discuss about the issue in appointment of Chief Election Commission. Why I am talking about this? Because this is a news because in 2023 there was an act came, Chief Election Commission and others, which was dealing with the appointment condition of services and terms act. This act has been said that it is not able to ensure transparency in appointment and functioning of the Chief Election Commission and other election commissioner. That is why Supreme Court has asked some sort of transparency and fairness in appointment of election chiefs. At the same time, government and the Solicitor General has said that there is no need to be suspicious and trust Prime Minister. This topic is important because at various occasions, UPSC and state PCSs has asked multiple questions related to the election commission like composition, power functions, free and fair elections, rule of election commission, and then what is the challenges before the election commission, role of election commission in appointment of party candidates, enforcement of MCC. So this is important topic, and today we are going to just see that what are the some provisions which we should keep in mind while writing an answer and what is the issue behind this act. So the article 324 to 324(2) 1 and 2 deals with the election commission composition and the role. The role is given in article 324(1), which saying that the superintendent's direction and control of elections. किनके elections को ये superintendent करेंगे? ये करेंगे parliament, state legislature, president and vice president. So these are the only 4 agencies in which election commission of India is involved regarding their election. Article 324(2) suggests that the election commission of India consists of chief election commissions and other election commissions as precedent fix. Presently 1 plus 2. Appointment shall, subject to provisions of any law made by Parliament, be made by the presidents. So Article 324 is talking about the chief election talking about the election commission and their appointments. 324(5), which deals with the removal. It can be removed from the office in like and manner on grounds such as the Supreme Court judge, that is proven misbehavior, incapacity via parliamentary impeachments. Though there are some protections, election commissions को कुछ protection है, cannot be removed except on the recommendations of the CEC, and it lacks direct constitutional protection equal to CEC. So here you can see that the constitutional protection which is given under article 324 is exclusive only to chief election commission, and election commissioners are not protected at all under this constitutional provisions. ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल अम्ब्रेला की अगर बात करते हैं रिगार्डिंग इलेक्शन एंड वोटिंग, सो आर्टिकल 326 इलेक्शन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पीपल एंड असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज. ठीक है, 18 साल से अधिक लोग जो है इसमें वोट करेंगे. 327 और 28 में बात करता है पार्लियामेंट्री एंड स्टेट लेजिस्लेटिव पावर टू मेक सम प्रोविजंस रिस्पेक्ट टू देयर इलेक्शंस, एंड दैट इज व्हाट दे हैव मेड अंडर दिस प्रोविजंस. CEC Act 2023. Article 329 is a judicial bar which is restricting courts to interfering in electoral matters regarding delimitations and seat allotments. Delimitation is an exercise after every census which is supposed to be to reallocate the seats of parliamentary constituencies. अगर सिलेक्शन प्रोसेस के एवोल्यूशन की बात करेंगे तो टिल 1991 appointment was made purely by the president on the advice of the prime minister union cabinet, and there was no legislative criteria was defined, so it was totally executive discretions. 1991 there was an act which deals with the service conditions of election commission. It fixes salary equal to the Supreme Court judge and tenure of maximum 6 years or 65 years of age. However, selection mechanism remained vague and entirely executive driven. Just I said earlier, during the process of 1950 to 1991 the process of selection was vague, and it continued even after 1991 Act. It was in 2023 Anup Barnwal Supreme Court has given a benchmark judgment and landmark judgment in which said that there must be some sort of transparency in the election of and selection of election commission. So Supreme Court Constitution Bench mandated interim selection panel which is consisting of Prime Minister, Leader of Opposition plus Chief Justice of India until unless enacts a law. So now on that basis there was an act in 2023 parliamentary law passed which replaced the 1991 Act, but
It overrides the Supreme Court's interim arrangements and replaced Chief Justice of India with a union cabinet minister. So this is what the judiciary is not accepting and considering it is not a fair process. थोड़ी कहानी को आगे और देखते हैं तो ये दिसंबर 23 से मार्च 2024 के बीच में प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल जाता है न्यू CEC एंड इलेक्शन कमीशन एक्ट 2023 विच रिप्लेसेस 1991 एक्ट, ठीक है। और उसी के हिसाब से फॉर्मर IAS अफसर ज्ञानेश कुमार को अपॉइंट किया जाता है न्यू CEC अंडर द न्यू मैकेनिज्म। सुप्रीम कोर्ट के कंसर्न एंड जुडिशियल पुशबैक के बाद भी removing the Chief Justice of India from the selection panel and replacing them with a union cabinet has been a matter of concern. So, अगर हाई स्टेक्स इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट की बात करते हैं तो रिपील ये 1919 एक्ट को ये रिप्लेस कर रहा है। ये एक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक्सक्लूड करता है फ्रॉम सिलेक्शन क्राइटेरिया। एंड फर्स्ट अपॉइंटमेंट आप देखेंगे ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू है। ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सुखबीर सिंह संधू इलेक्शन कमीशन। कुछ एक्ट्स के प्रोविजंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सिलेक्शन एंड सर्च कमेटी मैकेनिज्म की बात करता है। तो सिलेक्शन कमेटी में कौन रहेंगे? सबसे पहला काम होगा सर्च कमेटी का, स्टार्ट फ्रॉम द सर्च कमेटी। और सर्च कमेटी में कौन रहेंगे? मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस प्लस 2 मेंबर्स नॉट बिलो सेक्रेटरी रैंक। शॉर्ट लिस्ट करेंगे एटलीस्ट ये 5 कैंडिडेट्स फॉर द कंसिडरेशन। अगर ये कुछ कमिटी सेलेक्ट करती है विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू सिलेक्शन कमिटी, selection commission, then it's okay. Selection commission has primacy over such committee. Now who are in the selection committee? The chairperson will be the prime minister, member will be the leader of opposition, and other member will be the union cabinet ministers. And this person and this post is being opposed by the judiciary as well as those who are giving a petition in Supreme Courts. The Act explicitly states that any vacancy, एक्ट में ये भी कहा गया है कि अगर सर्च कमेटी या सिलेक्शन कमेटी में कोई जगह खाली है तो भी अगर कोई इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन सेलेक्ट होता है तो उनके सिलेक्शन को अल्ट्रा वायर्स नहीं माना जाएगा, ठीक है। अदर कुछ बात करते हैं 2023 एक्ट में। इन्होंने टेन्योर स्टेटस एंड रिमूवल की बात की है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर दिया है कि होल्डिंग अ पोस्ट इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, must possess integrity and expertise in management and conduct of election. Tenure and reappointment, no changes, 6 year or until reaching the age of 65, whichever is earlier. Bar, strict bar है। Chief Election Commission and election commissions are not eligible for reappointment. Resignation must be submitted to President. Salary and service perks की बात करते हैं तो salary allowances and service commission are equated with the judges of the Supreme Courts, ठीक है। ये इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। रिमूवल मैकेनिज्म क्या है? CEC का रिमूवल कैसे होगा? ओनली वाया सुप्रीम कोर्ट जजेज प्रोसीजर, आर्टिकल 324(5) इम्पीचमेंट इन पार्लियामेंट्स एंड दैट वी हैव सीड प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी। इलेक्शन कमीशंस के रिमूवल, इट कैन बी रिमूव्ड डायरेक्टली बाय प्रेसिडेंट ओनली अपॉन द रिकमेंडेशंस ऑफ CEC एंड दिस हेयर यू कैन सी दैट इट हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स की बात करते हैं। So the act remains completely silent on post-retirement employments in government office. No statutory bar or cooling off periods is mandated, which is suggested by so many committees which set up to look after the functioning of Election Commission of India. So what are the critical concerns? We have seen that there are no Chief Justice and it disregarded the Anup Barnwal judgment. This is what exclusion of Chief Justice of India. Second is executive dominance. How that in the selection committee there will be prime minister, union minister, and leader of oppositions. There will be one person who may go against the government wish, and 2 person likely union minister will not able to give fairness in this selection process. Vacancy loophole: if leader of opposition post is vacant or member absent, PM plus cabinet minister can proceed alone, completely eliminating the opposition oversight. So what it could be? It could be that member of the largest party, leader of the largest party in the parliament, Lok Sabha. Search panel bypassed. There is a clause in which it said that if the search panels suggested 5 names, selection committee or selection panel may do not agree with their recommendations. Bureaucratic narrowness. So it restrict eligibility strictly to secretary level civil servants and excluding jurists, legal scholars and dominant experts. Post-retirement silence, like absence or ban on future political or government post, creates incentives for executive favor and election commission and chief election
commission may act in a way which is favorable for government of the day. So these are some of the concerns: executive dominance, CGI inclusion, vacancy loophole, search panel bypassed, bureaucratic narrowness and post retirement silence. एक्सपर्ट कमिटी जो है, कुछ एक्सपर्ट कमिटी बैठी थी जिन्होंने बोला कि क्या हमें करना चाहिए। तो दिनेश गोस्वामी कमिटी ने रिकमेंड किया था कि सीईसी का जो अपॉइंटमेंट है कंसल्टेशन होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। 2007 में सेकंड एआरसी जब आती है तो उन्होंने कहा कि एक मल्टी मेंबर कलेजियम होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा स्पीकर, लॉ मिनिस्टर एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। प्रॉब्लम विद दिस इज वेरी बल्की, इतना बल्कि होने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है, लॉ कमीशन 255 रिपोर्ट्स 2015 में आती है। इन्होंने कहा कि दैट देयर मस्ट बी अ 3 मेंबर बैलेंस्ड कलेजियम, जो हम कह रहे हैं, जो दिनेश गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन और द लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो मॉडल कंपैरिजन अगर देख लेते हैं तो 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इंक्लूड करो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, बट 2023 एक्ट में इनको हटा दिया और इनकी जगह किसी कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर को, कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज, उनको पार्ट बना दिया। ग्लोबल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका में जो है इट्स अ मल्टी इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट, ह्यूमन राइट्स एंड जुडिशियल हेड्स जो हैं वो डील करते हैं इसके अपॉइंटमेंट को, और एक इंडिपेंडेंट पैनल बनता है जिसमें होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट, पब्लिक प्रोटेक्टर, कमीशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड ह्यूमन राइट्स। यूके की अगर बात करते हैं तो इलेक्शन कमिश्नर जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिकमेंड तो होते हैं, बट अप्रूवल चाहिए उनको हाउस ऑफ कॉमन्स का, ठीक है, एंड दे हैव लेजिस्लेटिव वीटो पावर्स विथ हाउस ऑफ कॉमन्स। सो क्रॉस पार्टी कॉन्फिडेंस की भी जरूरत होगी, तो दिस विल इंश्योर दैट सम सॉर्ट ऑफ अ न्यूट्रल कैंडिडेट बिकम चीफ इलेक्शन कमीशन एट इन देयर ओन नॉमेनक्लेचर। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो यहाँ पे देयर इज अ फेडरल इलेक्शन कमीशंस, मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट एंड कंफर्म्ड बाय द यूएस सेनेट। अगेन हियर you can see that the legislature is playing a role. Bipartisan statutory mandate prevents single party control over election administration. कनाडा की अगर बात करें तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड इट इज insulated from the executive appointments and report directly to the parliament. So here you can see that कि executive से ज़्यादा most of the जो डेमोक्रेसी जहाँ पे आपको दिख रहे हैं और जो बड़े देश हैं वहाँ पे legislature is also playing an important role. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि global best practices synthesis, global democracies heavily insulate electoral management bodies either through judicial participation like in South Africa or bipartisan mandate direct parliament approval in Canada. India 2023 Act stands out of relying primarily on executive discretion. So this is what the issue of executive discretions, what we can go ahead and what should be the middle path. So balanced selection committee reintroduce the bill, include CGI or a senior Supreme Court judge into the selection panel to restore 1:1:1 non-partisan equilibrium. या सेकंड ARC मॉडल विथ ब्रॉडर कंसेंसस, जिसमें आपने बोला स्पीकर को भी लाइए, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को भी लाइए, विच आई सेड दैट इट इज स्लाइटली बल्कि। पोस्ट रिटायरमेंट कूलिंग ऑफ, हमेशा से इसकी मांग होती रही है कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए 2 ईयर का CEC और ECs के अपॉइंटमेंट्स का फ्यूचर पॉलिटिकल असाइनमेंट्स लेने से पहले, या प्रिवेंट, इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेंट होगा, और इट इज़ लाइकली दैट द पर्सन हु इज़ doing the role of election commission and chief election commission are not supporting the government of the day. Then there is also call of independent secretariat, separate cadre and secretariat to ensure operational independence, equal protection. And now another call is that the constitutional protection is only available to chief election commission. Why not other election commission have given this? So here there is a need of equal constitutions. It will allow them to work more neutral way. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं कि चार्जेस ऑन द ऑफ ESI डायरेक्टली ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज डन फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड कंप्ट्रोलर। So now coming to the constitutional philosophy and conclusion. So we can like to quote Dr. B.R. Ambedkar, who said that the election machinery should be outside the control of the government of the day and insulated from the executive thumb. Core dilemma we have is the independence versus the executive dominance. Free and fair election is a basic structure of Indian constitution accepted multiple times by Supreme Court and the judiciary. When Parliament holds the authority under 324(2) to frame laws, mechanism must reinforce public trust rather than creating a public perception of executive influence.
And this was just a summary here. You can say that कि अनूप बर्नवाल रूलिंग में उन्होंने कहा पीएम लीडर अपोजिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट इन्होंने चीफ जस्टिस को रिप्लेस करके कैबिनेट मिनिस्टर को बना दिया और यहाँ पे ये बाई पार्टीशन हो जाता है, ठीक है। वन देन सैलरी जजेस के इक्विवेलेंट कहा, ये दैट्स गुड। ओपन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एलिजिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, बट इट रेस्ट्रिक्टेड इट टू द सेक्रेटरी रैंक लेवल। सर्च कमिटी अनु बर्नवाल में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, बट इन्होंने एक बनाया लॉ मिनिस्टर टू सेक्रेटेरिएट secretaries who can shortlist 5 candidates, but that can be bypassed by the selection committee headed by prime minister. Post retirement bar, it's Anup Barnwal's judgment said that there must be some safeguards, some cooling off periods, but there is no such cooling off or any such provisions. Key reform, what we can do, that equal protection to CEC, consolidated fund charging, that is financial independence, 2-year cooling off periods, and inclusion of Chief Justice of India, which we are saying. So this is what from our side regarding the Chief Election Commission and other election commissioners appointments. If you find this video helpful, like it, share with your friends and subscribe the channel. Thank you very much.